I apologize, I had to keep you all waiting because I was attending to previous work committee at CI. That is fine. Rajiv ji is there? Yeah. So I had sent a presentation to you. So I have a presentation on that which I created and I shared with Chandigarh Institute students. It's a presentation on how to build a D2C brand or direct to consumer brand and some startup idea. Okay, now it is something which is really basic. As I'm told that after already entrepreneurship digital, I had created that to inspire students to undertake vision. So I just want to ask कि आप लोग उस presentation को देखना चाहिएगा या फिर should I just stop that and help you address your problems? Both. Both? So we'll start with presentation. If there is any basic information, please forgive me. I did not have enough time to tailor it down to your expertise, especially because I did not know which stage we were. Shouldn't we forget? That it's a hybrid mode. It's online. we are just waiting for the presentation. There's a seat right here. With me. What's the email page? I'm really trying to see. आप लोगों को स्टार्टअप एक्सपीरियंस आप लोग अंदर रहिए पहले तो एक रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि अपने फोन साइलेंट मोड पे डालिए सो दैट इट डजंट डिस्ट्रैक्ट आवर फोन। दूसरा आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों का जर्नी अभी कितना रिसेंट हाउ लॉन्ग my startup is very sharp. लोग 3 साल से काम कर रहे हैं और we started in 2009 और हम लोग हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म क्रिएट किए और रूरल इंडिया में प्राइमरी हेल्थ केयर इकोसिस्टम सेटअप करते हैं जो अगर फिजिकल सेंटर्स यहाँ पे टेलीमेडिसिन और वहीं पे दवा लैब टेस्ट that's one room under one room patient सारे प्राइमरी हेल्थ केयर के नीड्स So are you looking at generic medicine? Both ethical and So you are doctor के consultation and you enable doctor consultation and you are state farm. What's your name? Amanullah and number one. Yeah. And that's a private. Huh? Intensive health practice और भी टेक्निकल कंपनी और डॉक्टर हॉस्पिटल डॉक्टर कंसल्टेशन आप लोगों के पास कितने डॉक्टर होंगे? हमारे पास 250
1228 राइट एंड आप लोग चलिए मैं अपनी प्रेजेंटेशन में ऐसे और Hi, my name is Sandeep. I am from MetaWorks. We are basically providing VR simulations for medical students for UG and PG students in Australia. so what is it purpose of educational purpose or For educational. तो जैसे कि आप वर्चुअल रियलिटी सर्जरी और ये सब कर या फिर सिमुलेशन तो आपने अब तक क्या AD is sampling of manufacturing. We just start. My subjects आगे दो उनका काम है कंटेंट बनाना हमारे राइट फोकसिंग ऑन वन स्पेशलिटी आगे फोकसिंग ऑन ये तो बस सर्जरी नेम अगेन संदीप फ्रॉम MetaWorks. मेटावर्स मेरा नाम ईशान शान ओके स्टील वाले हैं। स्टील बता और हम लोग जो स्टील के जो एंड कंज्यूमर जो फैब्रिकेशन बिजनेस में है तो वो उनको मतलब एक हाइपर लोकल वे में प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको अपना जो प्रोडक्टिव समय है वो जाके मार्केट में सामान खरीदने में बिताना ना पड़े और हम लोग उनको मतलब 2 घंटे के स्लॉट में डिलीवर करते हैं। तो जैसे कि when you say hyper local तो मतलब कैसे आप लोकल वेंडर्स के साथ काम तो if I am a construction worker और मुझे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर मुझे स्टील चाहिए तो मैं आपके साथ एक ऑर्डर प्लेस करूंगी फिर आप मुझे 2 घंटे के आप मुझे 2 घंटे के अंदर डिलीवर करेंगे And my you can use this myself Vikas and we have a tutor consultancy. future consultant Yes, tutor consultancy. We connect tutors and tutors and guardians and the educational institutions. So basically, so it's an edutech startup correct. Basically, we provide online and offline tutors, and we connect educators with the educational organization. And basically, in online and offline, mainly we are focusing on one-to-one session in academics and non-academics. In academics, if you say from KG to 12, and like for extracurricular activities also, like coding, dancing, singing, and guitar, likewise. So that's what we do, and we have more than 3,000 teachers connected with us right now, and more than 3,000 guardians are connected with us. But till date, we could give service to 1,000. Like the confirmation came from 1,000 guardians, and operationally, is your business model like budgets you sell via hardware or is it completely service based service. Basically, yeah, one-to-one we are focusing on right now. one-to-one you are focusing on budgets No, one-to-one session we are focusing. you're focusing on one-to-one digital sessions so how Offline session है. Offline session. offline session oh yes sir मेरा नाम राहुल है हमारी कंपनी का नाम ब्लॉसम रिव्यू है blossom रिव्यू review हम लोग टूरिस्ट फोटोग्राफी को मैनेज करते हैं जो कि अभी टूरिस्ट फोटोग्राफी मार्केट में चल रही है ऑफलाइन उसको हम लोग ऑनलाइन लाने की कोशिश कर रहे हैं okay Hello ma'am, I am from the same team Metaverse. That is metaverse okay My name is Sonu Saurabh from TechGate Innovation. My startup is automated irrigation system. Basically, it is agri-tech product. We are working on embedded electronics with agriculture. can you explain it to me We build a device you just have to press that button we build a device that is automated irrigation system. That is my first device, and this is sensor-based device. Sense the moisture of soil and perform according to moisture level to plants.
So after the sensor senses the moisture level, then what happens? It senses the moisture. It sends the moisture level of pot. Pot. And perform according to moisture level of soil. Hi, this is Rajiv. My company's name is Ritu Organic Private Limited. We are into exports as of now. We get product contract manufactured and we are exporting it as well. So what do you export? Herbal, Ayurvedic medicines, food supplements, and besides that, personal care products. Rishabh, and my company name is Origin Styles. We are selling sustainable products and we create eco store like What kind of sustainable product? it made of bamboo products like toothbrush, toothpaste tablets. Lifestyle accessories. Okay. मेरा नाम राहुल हुआ मेरा स्टार्टअप है ड्रीमोफाई डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड ड्रीमोफाई.com ब्रांड नेम है हम कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं इंटीरियर डिजाइन का मतलब डिजाइनर से एग्जीक्यूशन तक का जिसमें हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे वेंडर्स होते हैं कनेक्टेड सारे सर्विस सप्लायर होते हैं और डिजाइनर्स होते हैं ये तीनों का एक प्लेटफॉर्म है और उनको हम कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी देते हैं कस्टमर को मल्टीपल उनके पास ऑप्शन होता है डिजाइन का तो वहाँ से वो आपके की मार्केट्स क्या है? की मार्केट हमारा है कमर्शियल जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको वो सारा हम नहीं की मार्केट एज ए सिटी इज इट बिहार इज इट 2 tier 3 tier सिटी पे हम फोकस कर रहे हैं मेनली अभी हमारा स्टार्ट है और आपके कितने वेंडर्स इन दिस रीजन? हमारे पास अभी है जो पहले से हमारा था अभी प्रोटोटाइप स्टेज पे लेकिन हमारे पास ऑलरेडी है मतलब लगभग 50 वेंडर्स है जो हमारे पास पहले ही से रजिस्टर्ड है 50 वेंडर्स। मेरा नाम कृष्ण रानी मेरे स्टार्टअप का नाम अनमाइजेरिया जो मेंटल हेल्थ वेलबींग पे काम करता है और ये स्कूल्स कॉलेजेस और ऑफिसेस में टाई अप करके और उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड करता है So you work with counselors और आप लोग स्कूल से इंस्टीट्यूशनल टाई अप करते हैं ओके और टिकट्स लैब इसमें हम लोग IT सर्विस प्रोवाइड करते हैं वेब डेवलपमेंट या फिर किसी हम लोग करते हैं तो क्या प्रेजेंट करते हैं टिकट्स लैब में आपने कहा ना कि मार्केटिंग तो आप मार्केटिंग मतलब आप या अपने कंपनीज के लिए आप कंपनीज के लिए मार्केटिंग प्रेजेंट करते हैं on contractual basis. So suppose if I'm a company and I need marketing support, I will come to you or develop a AR stack for me. So you will help me with that. So like these services तो आपके पास अभी कितने ऐसे कंपनीज हैं? हाँ हम लोग 50+ क्लाइंट्स के लिए वेब डेवलपमेंट का है के लिए काम किए हैं और हम लोग AR/VR पे भी काम कर रहे हैं और जिसमें हम लोग का एक प्रोडक्ट है तो आप कोडर हैं डू यू कोड आप डेवलपर्स के साथ काम करते हैं ओके We are into manufacturing incense based on the principle of aromatherapy, which is made up of multi-subject and Ayurvedic songs. This is the project for which I have been asked from another price from Bihar government. But besides we are also into delivery of organic food products directly to consumers. So what I want to ask you is ये जो incense है ये इंसेंस में जो आपका प्रोडक्ट है तो ये आप बेसिकली वो अगरबत्ती और ये सब को आप टारगेट कर रहे हैं या फिर वो कैंडल्स और ये सब के फोकस कर रहे हैं? हम लोग अगरबत्ती को निकाल रहे हैं अगरबत्ती हाँ जो कि बहुत बहुत बड़ा मार्केट है और we have spoke with that for going in Japan also.
तो आप ये जो ऑलरेडी जो साइकिल अगरबत्ती और ये सब जो ब्रांड्स हैं आप उनसे कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? तो ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे ये अगरबत्ती को आइकन नेचर को बराबर होता है। तो No, I understand aromatherapy, sir. What I have a problem understanding is कि जो incense market में toxins release होते हैं, right? जो normal incense से होता है, तो are you helping solve that? yeah, basically that is the problem. Because whatever product we are getting today, whether it is 4 rupees packet or 400 rupees packet, there is 100 which is then more toxic than it. So you are creating a clean incense brand. Are you creating a clean incense brand? Clean, free of toxins. Yeah. सर ये सब टर्म्स सीख लीजिए आपको मार्केटिंग में हेल्प होगा ठीक है हाँ That is our target. मेरा नाम निहाल राज है और मेरे कंपनी का नाम है तेजरी रसोई। वी आर प्रोवाइडिंग होममेड फूड ऑर्डर्स। तो आप कैसे मतलब खुद का आपका क्लाउड किचन है कि आप के साथ टाइप करके हाउसवाइफ के साथ में तो हाउसवाइफ इन बिहार इन पटना तो यानी आप सिर्फ पटना में ही वो सप्लाई अभी क्रिएट किया छोटे बॉडी इंडस्ट्री से कोई बोले तो जैसे कि मैं एक एक्सपोर्टर हूँ सपोज आई एम अ बायर इन यूएस तो मैंने आपसे जैसे तो यानी आप बल्क में कैसे सप्लाई कर रहे हैं तो आप रीसेल करते हैं मिनी सो जैसे तो आप ऑनलाइन amazon.com.in alibaba.com चाइना को बेच रहे हैं आप ये भी कर सकते हैं वो पूरी दुनिया को बेचते हैं हम उन्हीं को बेच रहे हैं वेरी गुड ओके We are from technology company Mars Info. Mars MAAS. Mars Info Yes. We are basically in the IT. क्या करते हैं आप Software develop करते हैं, app develop करते हैं, services भी provide करते हैं. आज तक सबसे इंटरेस्टिंग ऐप कौन सा डेवलप किया आपने अकॉर्डिंग टू यू So basically, I am from IT side. So TC defined. ही इज द डेवलपर बट मार्केटिंग में भी आपके पास सबसे इंटरेस्टिंग चैलेंज कौन सा Actually, when you learn, if you are in the market now, then you will have to provide your services best. तो आज गूगल पे या कुछ भी ऐसे पे करते हैं तो या कोई भी आप वेबसाइट पर करते हैं ऐप पर करते हैं पीपल दे डोंट वांट टू वेट वो सर्विस आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बेसिकली कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप बहुत बढ़िया कुछ ऐसा वो तो बहुत ज्यादा चैनलाइज अगर आप उसमें सेटअप करते हैं बहुत सारे पेज दे डोंट वांट टू ओपन दे वांट कि हमारा जल्दी से ऑपरेट हो जाए और चीजें हमारी जो फोकस है वो फर्स्ट सेकंड पेज So quick checkouts right I am Satyam Keshri ma'am from Health Seva. We provide in-home medical facilities in Patna. Oh, you know, when I landed in Patna, I saw an in-home facility advertisement, which I was very glad to see because it shows some kind of progressiveness in our health. Good. Health Seva. Yes. Okay. You hear already. Satish Kumar Basra, from Usam. We are providing online photography at I'm the person. So, okay.
Yeah. Jitesh, can you introduce yourself? The royal card. It's like, school colleges, Very nice. Yeah. Very nice. Okay, great. So I think I have been introduced to almost all of you in this room. Thank you so much for very patiently introducing yourself. First of all, I'd like to congratulate you because you are 0.1% of the Bihari population that's willing to do a startup. There are not many out there, and I'm so proud of you because we need this. Bihar needs this. Okay, so you are solving very important problems. You should be proud of yourself because आप लोग एक वेव के अगेंस्ट हैं और वो वेव है ना, वो आज का वेव नहीं है, वो मतलब इंडिपेंडेंस से चलता आ रहा है, वो वैसा वेव है कि पढ़ाई लिखाई करो, यूपीएससी दो और बिहार से निकलो, वो वाला वेव है. एंड आई डोंट नो आप में से कितने उस वेव के विक्टिम्स ऑलरेडी बन भी चुके होंगे, राइट? बट यू आर हियर and you are doing something good and you're solving very important problems. So I would like you to clap for yourself. Okay, so presentation के लिए, is there a way I can control this presentation? I'll do it. Okay. So today I'm going to talk to you about the direct to consumer brand concept and some startup ideas that can help Bihar. Okay. Obviously you are already solving these problems, but there are some other interesting problems which we can solve. So before we dive into the presentation, is this playing automatically? No. Okay, you are changing, right? So before I dive into the conversation, I just like to give you a brief content overview. Running a startup, ये सबसे पहला सीख होता है. Please अपने टीम को, अपने स्टार्टअप को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया कीजिए. And before you are pitching to anyone else, have a content overview, right? Because people want to see what's waiting ahead for them. Okay. So I'm just going to talk to you about a little bit about our organization, Aishwarya Group and Global Beauty Secrets. I'll give you a small introduction to the direct to consumer concept and the overview of the space. आप में से कितने लोग direct to consumer space में operate कर रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so almost. Sorry. We are same, like you can count as one. Okay. So almost 10 people roughly who are operating in the direct to consumer space. What do you know about direct to consumer space? अभी आपको क्या पता है? क्या होता है direct to consumer? आप में से कोई भी जो बोलना चाहेगा? Just feel free. देखिए ये डिस्कशन है. अगर आपने कुछ stupid बोला भी तो कोई जज नहीं करने वाला. Okay. We directly try to understand the requirement of the customer, and then accordingly we try to feed them the way they want it, and we try to customize the solution in such a way, like if something is missing, we try to add in that. Okay. So direct to consumer का main ये है कि पहले एक brand run करने के लिए बहुत intermediaries चाहिए होते हैं. ठीक है, जैसे यूनिलीवर ने ब्रांड लॉन्च किया या नेस्ले ने ब्रांड लॉन्च किया, उन्हें 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए और इंडिया ये चाहिए वो चाहिए, सेल्स पीपल चाहिए पुश करने के लिए. पर एक कॉन्सेप्ट आया मार्केट में व्हिच हैज बीन एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन. एक कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में व्हिच हैज बीन एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन. ठीक है, क्योंकि डिजिटाइजेशन, स्पेशली डिजिटाइजेशन के अराउंड एक और वेव आया था और आई वुड लाइक टू आस्क यू कौन सा वेव था व्हिच अकॉर्डिंग टू यू? COVID wave. Yes, exactly. COVID wave that rapidly accelerated the penetration of D2C brands in the Indian market. ठीक है, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि आपने वेबसाइट बनाया, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं,
कस्टमर डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे आके वो प्रोडक्ट्स खरीदेगा एंड देयर नो इंटरमीडिएट्स, कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई स्टॉकिस्ट नहीं है, कोई रिटेलर्स नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, अब सीधे ब्रांड है और कस्टमर है, ठीक है। और आपके पास कंप्लीट कंट्रोल है उस प्लेटफॉर्म का, इट्स लाइक आपके पास कंप्लीट कंट्रोल है उस प्लेटफॉर्म का, ओके। यू कैन बेसिकली, अब ये भी नहीं है कि यू नीड वेरी कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग टेक्नोलॉजी और वेरी कॉम्प्लिकेटेड डेवलपर्स टू develop that thing for you. You can just do it on your own. It's that easy. There are tools in the market that enable that. So आज एक brand launch करना इतना आसान हो गया. So if you have a genuine story and if there is market demand, nothing can stop you. Okay, that is why I found this to be a very important thing that people in Bihar should know about. Okay. तो ये D2C कॉन्सेप्ट है और इसका हम एक ओवरव्यू डिस्कस करेंगे कि अभी कितने ब्रांड्स हैं, क्या इसका मार्केट साइज है एंड ऑल दैट। फिर हम डिस्कस करेंगे कि बिहार को भी उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, व्हाई शुड बिहार एज अ स्टेट, बिहारी को भी उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए इस कॉन्सेप्ट में। मैंने अपने कुछ छोटे कजिन्स थे उनको प्रेजेंट किया था ये प्रेजेंटेशन बिफोर आई स्पोक इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड यू। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, हाँ यहाँ पे लोग सर्वाइवल के लिए मर रहे हैं, व्हाई शुड दे बी इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक दिस। तो हम उस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, ठीक है। कुछ स्टार्टअप आइडियाज जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक मैंने एक्सरसाइज किया था स्टूडेंट्स के साथ, हाउ टू बिल्ड अ D2C ब्रांड। उसमें मैंने क्लासरूम को 2 डिविजन्स में कन्वर्ट किया था एंड आई जस्ट गेव देम क्विक स्टेप्स जिसमें वो एक D2C ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। So would you like to do that exercise or do you think it's not necessary? We'll go ahead, we'll go. You do? Yeah. Okay, so one team at this side, one team at this side, we'll do that exercise. Okay? Then theory versus experience. मेरा जो experience है versus जो मैंने चीजें पढ़ी हैं, उसका हम कुछ discuss करेंगे and we will conclude this entire presentation with women's participation in our economy. Okay? Okay, thank you. Can you take us to the next slide now? So a little bit about Aishwarya Group. It was started by my father, Neeraj Kumar Nir. He's a man from Patna, Bihar, and he started this company in the year 2006. Today, this group has an annual turnover of 500 plus crores. Next year, we are targeting 600 plus. We employ many Biharis across contractual work and key strategic positions as well. The key brands launched and selling in Bihar. So these brands, Wellcart Max, Colio Cal XP, Wellcart Fem, Florida XP, all of these are present and are being sold via Bihari doctors. We have many strategic partners in the state, and we have just recently started doing some corporate social responsibility activities, which include the meal drive, where we contributed more than 50,000 meals to hungry people over a period of 5 days under the Santi Suresh Charitable Trust. Next. A little bit about Global Beauty Secrets. It is a brand that was founded by me. It is a wellness brand started in 2018 exclusively on Nykaa with 29 products across hair, skin and body. We have 13 retail stores, including chains like Shopstop Beauty, Taj Khazana, Nykaa, Shopstop Bikini, and other such salons. The positioning is luxury, so we have maintained very limited presence across metro cities and tier A retail stores. We have 24 team members plus an online community of 11,000 people, 16 online platforms, 20 pop-ups, 20,000 plus customers, and 50 plus media features. Next. An overview of the D2C space. अभी जैसे मैंने already आपके साथ discuss किया कि you can sell directly to customers, okay? There are online platforms that enable this, platforms like Shopify. It says Shoplift, but that happened because of autocorrect. But what I mean is Shopify. Platforms like Shopify, Squarespace, WordPress. These are some platforms that have enabled these change. Basically because Shopify has democratized website development. Squarespace, WordPress, Squarespace has democratized website development.
Last year, more than 600 direct to consumer brands emerged out of our country. And this is expected to grow at a rate of 34 to 35% up till 2027. So expect more lanes to come in this space. And more than $2.1 billion worth investment was raised in this space. And it has a market size of $55 million. The largest growing segment in this space is fashion and accessories. But there are also other categories like health and fitness, food and beauty, and obviously, as Sir is also doing incense, aromatherapy, wellness. So these are some of the most, fast emerging categories in this space. Do you guys have any questions? Please feel free to ask. Okay. Can we move on to the next one? So why should Bihar be interested? Okay. Bihar is the third largest producers of vegetables in the country. So what does it imply? It implies that we are a very fertile state. We are a resource-rich state. Okay. And it accounts for 85%. So it is the largest producer of fox nuts in the country. Imagine one of the most popular snack categories in the entire country. आपने भी देखा विराट कोहली endorse कर रहा है मखानास को, right? But आपको लगता है वो brand बिहार से है? Nice, right? So, again, we are the producers, but we have not claimed value for our production. So that is why we should be interested in what can we do with the resources which we are already producing. Okay, and as entrepreneurs, we can enable this change. As entrepreneurs, we can drive this change. We are very well connected to the rest of the India through air, rail, and road. Do you know how many airports does Bihar have? Right. 3 years ago. Right, exactly. So airport penetration is very quickly happening throughout the state. We are very well connected to all the directions in the country. So अगर कोई ऐसा करेगा कि हम locational disadvantage पे हैं तो नहीं है सर. हम North East India में नहीं है. We are very well connected to the rest of the country. Okay. अभी सबसे मुझे जो important part लगता है कि we are the third most populous state in the country. और आगे वाले slides में मैं कुछ ये भी दिखाऊंगी आपको कि 58% of this population is in working age. We are in the working age of 15 to 58. Okay. ऐसा भी नहीं कि हमारे पास सारे old retired लोग हैं. We are like very young, very youthful crowd, ready to work, ready to join the workforce. So we are the third most populous state in the country, but one of the most highly unemployed and poor states as well. So ये कैसे हो रहा है? Isn't that statistic really alerting? We are going wrong somewhere, right? And startups can help solve this problem. Startups can employ that youth which is migrating to outside the state. Okay. Policy readiness and government support. Obviously, as you would know that the Bihar government is ready to fund the startups now more than ever. There's a startup policy, there's a yoga policy that has come in picture. Recently, I think I've heard that more than 50,000 quotas are being opened up for funding for tech-enabled startups. Okay, so now more than ever, there is a huge push by the Bihar government to promote startups. You know why? Because I think this will help us build a very youth-friendly culture, which I feel that Bihar lacks right now. And once we become a youth-friendly culture, the IT companies and all these other blue-collar companies, they will automatically start getting attracted to our state. So startups are now the biggest, क्या कहते हैं उसे? Torch bearers. They are the torch bearers of the next generation of Bihar. Okay? There's a novelty fact. आप में से कितनों ने have you been subjected to racial profiling by Indian? आप गए हो कहीं पे और बिहारी के हंस दिया उन्होंने, हाँ, you are from Bihar.
आपके साथ हुआ है? किसके साथ नहीं हुआ है ये बताइए। आपके साथ कभी नहीं हुआ है? तो ठीक है, मतलब 30 लोगों में से 3 लोगों के साथ नहीं हुआ है, पर बाकी 27 लोगों के साथ हुआ है, यानी ये एक रियलिटी है, राइट। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा? और कौन से बॉलीवुड मूवी नहीं देखी जहाँ पे बिहार का मजाक नहीं उड़ाया है यार? सबने बिहार का मजाक उड़ाया है। Every movie that I have seen on Bihar, they have made fun of Bihar. Every movie that I have seen on Bihar, they have made fun of Bihar. Okay, so somewhere, you know, it's like popular culture में हमें decimate कर दिया है. Like we are the lowest of the low. They don't expect anything good coming out of here. So that is why if something good does come out of here, there's a huge novelty factor attached to it. Okay, people will actually be surprised. Oh my God, this is from Bihar, you know, they'll be surprised. And that's what you have going to actually. We are obviously rich in natural resources, which I've already elaborated to you. And जब हम नीचे होते हैं, तो कौन सा डायरेक्शन होता है उठने का? ऊपर, right? When you are at rock bottom, you can only go up. So अगर बिहार 11% urbanization rate पे है, तो हमें इसे ऊपर लेके जाना है, तो 60%. So there's so much scope for development. या तो हम ग्लास को एक entrepreneur ग्लास को या तो हाफ फुल देख सकता है या तो एम्प्टी देख सकता है, बट अगर वो ग्लास को हाफ एम्प्टी देखता तो वो entrepreneur होता ही नहीं. So we are left with only one option. We have to see glass half full, okay? And we have to say that this 11% can become 60%, okay, 70%. We can get as developed as most of the states of this country. Okay, next. So मैं बस ये डिस्कस कर रही थी कि क्या हो सकता है और स्टार्टअप आइडियाज जो बिहार को हेल्प करे, क्योंकि obviously there is a huge push on IT, there is a huge on healthcare, there is a huge push on these other sectors within the state, but naturally it is food processing. मैंने एक एकड़ जमीन पे या तो अभी मुझे आइडिया कोट नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्कोहल इज बैन्ड इन द स्टेट, बट जस्ट ड्यू टू जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पसेस मैं इसे कोट कर रही हूँ. जैसे कि 1 एकड़ जमीन पे बिहार के किसी फार्मर ने अंगूर उगाया, उसने 2 रुपए में बेची, राइट. बट यही चीज ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब में वो लोग उसे वाइन मेड बना के 2000 रुपए में बेचते. तो लैंड उतना ही है सर, पर कोई उससे 2 रुपए कमा रहा है और कोई उससे 2000 रुपए कमा रहा है, और फर्क बस उतने का ही है. और दैट इज व्हाई बिहार हैज द पोटेंशियल, क्योंकि वो हमारे स्टेट से तो इंडिया को खिला रहे हैं. They're the third largest producer of vegetables. आपने शार्क टैंक देखते हो आप लोग? Yes. आपने झाड़ी अचार देखा है? कैसे मजाक उड़ाया था उनका, फिर वापस आ गए फंडिंग देने वाले, राइट. So झाड़ी अचार is one of the strongest examples of how they are solving 2 problems. एक तो औरतों को वर्कफोर्स में लेके आ रहे हैं, और दूसरा ना बिहार जैसे नेचुरली वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट के उस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके उन्होंने एक अचार बनाया है, मिथिला के अचार, व्हिच मेक्स मी सुपर क्यूरियस, क्योंकि अगेन दैट्स अ नोवेल्टी फैक्टर देयर, राइट. पीपल वर लाइक व्हाट, देयर मिथिला के अचार, लोग माँ के हाथ का अचार कहते हैं, पंजाबी अचार कहते हैं, ये कहते हैं मिथिला का अचार क्या होता है. एंड दैट ड्रोव पीपल टू ट्राई दोस पिकल्स एज वेल, राइट. Millets has been declared as the cash crop of the year by the government of India. There's so much push on millets. मतलब अगर हम एक राजस्थान और यूपी अभी by the way highest producers of millets हैं, तो I don't know, अभी बिहार can easily claim that space अगर हम उस पे pedal उसे accelerator दबाएं तो. Fox nuts, as I already highlighted, कि मतलब एक भी मखाने का ब्रांड हम हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फॉक्सनट से, और मखाना यहाँ से क्यों नहीं हम सेल कर पा रहे हैं? व्हाई कैन नॉट वी सेल इट टू द वर्ल्ड? क्यों केरला का जो बनाना चिप्स है, वो केरला के बनाना चिप्स बन के एक्सपोर्ट मार्केट्स में $30 $40 में बिक रहा है, और हम यहाँ पे उस अपने मखाना से 2 रुपए 5 रुपए भी नहीं जस्टिफाई कर पा रहे. सो यू नो दैट इज समथिंग दैट वी शुड थिंक अबाउट.
Software services capex is very less. Of course, BPO, customer services, data labeling. Data labeling पता है आप लोगों को? नहीं? AI में एक नया relevant field हो गया है. AI ये होना क्या होता है? Artificial intelligence. टेक वाले कौन हो गए यहाँ पे? AI क्या होता है सर? वो तो मुझे भी पता है. आगे. एक ऐसा मॉडल जिसको हम लोग ट्रेन करते हैं बाय लार्ज डेटा सेट से rechargeable मुझे एज ए यूजर डिस्क्राइब कीजिए. ये ठीक है. ये मुझे एज अ डेवलपर. जैसे कहते हैं कि हमारे पास हजार लाखों डेटाबेस हैं. सपोज कर हेल्थ टेक में बात करते हैं कि एक बिकॉज आई एम फ्रॉम हेल्थ टेक, तो सपोज करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे 1 लाख डॉक्टर्स आ गए, ठीक है, एंड वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एक खास तरह के मेडिसिन को. सपोज कर जनरल फिजिशियन है और वो बुखार के लिए इस टैबलेट को डिफाइन कर रहे हैं. वो हमारे पास लाखों डॉक्टर्स हैं, हम उनका डेटा है, हम उनको एआई के माध्यम से करेंगे कि हम एनालिसिस करेंगे कि बुखार एक फैक्ट से यहाँ तक कौन कौन से दवा को लिख रहे हैं लार्ज सैंपल्स के. उसके हिसाब से जब मान लीजिए कोई नया डॉक्टर्स ऑन बोर्ड होता है, न्यू कॉमर्स डॉक्टर्स जो पास आउट स्टूडेंट है, हमको जो मॉडल है कि जब वो जब ईएमआर सिस्टम में जब वो बुखार फीवर लिखता है विद सर्टेन एज ग्रुप्स, तो वो उसको प्री डिफाइन कर देगा कि ये सबसेट ऑफ ये आई मीन आपका मेडिसिन से वो आ रहा है. तो इसमें एक बहुत एसेंशियल इनपुट है. वो क्या है? डेटा मतलब हम ये कर सकते हैं कि सैम्पलिंग या तो सैम्पलिंग को तो रेडी करना पड़ता है ना. तो वही क्या है, तो वो कौन करता है? तो वो है सिंपल वर्ड में अगर बोले तो मशीन को एक तरह से ह्यूमन ब्रेन की तरह बिहेव करना. दैट आई नो, बट जैसे इन्होंने बोला राइट कि मैं प्रोसेस में आपको लेके जाना चाह रही हूँ हल्का सा कि आप डेटा को डिफाइन कर रहे हैं. तो वो डेटा में क्या, वो डेटा को कोई तो लेबल कर रहे हैं ना. वो लेबल कर रहे हैं. तो अभी आप लोग कैसे करें? आप लोग खरीद रहे हैं बाहर से? नो एक्चुअली हम लोग भी हमारे पास मास सिस्टम है, हम लोग डॉक्टर्स को सॉल्यूशन देते हैं. सपोज करते हैं 50+ डॉक्टर्स हमारे एनेबल है, दे आर यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म, दे आर वो इनपुट कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं उस पे डेली बेसिस पे 15-20 इस तरह एवरेज में प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं. तो हम बस लार्ज डेटा सेट ऑफ नंबर्स कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं, so we can further use in that model. ओके. तो जैसे कि वो डॉक्टर लिखते हैं ना. कल आपने एक मान लीजिए सेल्फी टू डिटेक्शन वो टेक्नोलॉजी लॉन्च किया. उसमें आपके पास डेटा नहीं है, बट यू वांट टू इनेबल दैट टेक्नोलॉजी. सो आपको क्या चाहिए होगा? यू वुड नीड रेडीमेड डेटा, राइट? वो रेडीमेड डेटा एक कमोडिटी है जो अनस्किल्ड चीज. ओके. जैसे कि you give them large subsets of data, you just get people to label it, and then people will buy it. So that is missing, and that is something that you can easily create as a that IT companies also buy. हर टेक enabled company को data pack की जरूरत होती है to enable their AI, and Bihar can get into this big time because we have that labor, we have cheap skill labor. So that is something that you can look for. Software development, of course. तो ये कुछ चीजें जैसे पंजाब में there is this woman मनदीप टांगरा करके. I don't know उसका कुछ I don't remember the name of her startup. Some with I don't remember. मनदीप टांगरा उसका नाम, आप देख लीजिएगा. उसने क्या किया है, वो पंजाब से ऐसे रूरल पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयड यूथ इनको पिकअप करती है. शी स्किल्स देम और उनका उसने कस्टमर सर्विस और बीपीओ सेंटर बनाया. तो शी हैज रिसीव्ड इंटरनेशनल अटेंशन. मतलब वो एकदम मतलब people are like so interested in her startup to see कि क्या potential है, क्योंकि she is solving so many problems at the same time. She is creating white collar jobs for the rural population. She is, helping solve the problem of migration. So people are very interested in what she's doing. That is something that we can consider for Bihar as well. Okay, premiumization of our cultural products. As I said, there's so much of novelty factor that's attached to Bihar. Things like Madhubani art, Peda, our cuisine, the Tasar silk, Malda mangoes. आपको अल्फोंसो पता है?
आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स वर लिविंग इन केरला एंड कश्मीर उनको पता होगा मालदा, पर मुझे लगता है कि मालदा इकोनॉमिक से बेटर है एनी डे बेटर है, राइट? बट अगेन वो दुनिया को बेचा नहीं है हमने पूरी तरीके से, इसलिए वो चीज कहीं खो गई और वो खो भी जाएगी अगर हमने ऐसे सिक्योर नहीं किया तो। ठीक है, हिस्टोरिकल इंटरनेशनल टूरिज्म, आई मीन मोदी, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने अगर इंडिया ट्रैवल किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह पे लिखा हुआ है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आप सबने देखा है? अगर इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो बिहार ग्रैंड मदर है। डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं है, राइट? येट G20 की इनॉग्रेशन यहाँ पे नहीं है, ओके? बिकॉज आई डोंट नो क्यों नहीं हुई, बट होनी चाहिए थी। तो आई जस्ट फील कि मौर्य डायनेस्टी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, democracy, Takshila, Nalanda, even Sikhism. There's so many important historical events that have happened in Bihar. But just because we do not take pride in our culture, we're losing hold of those important cultural artifacts. Okay, especially Buddhism, I would like to highlight because this is the strongest and the most uncontested space. There's so many pilgrims from Southeast Asia who are interested to see the birthplace of Buddhism, who are interested to see Buddha there, but उनको horror stories tell की जाती है. So if you can actually come up with like tourism company ideas that can, you know, promote their journey into Bodh Gaya, that can help them see Takshila, literally all these important pilgrimage sites, there's a huge scope there. You will get a lot of horror. Like virtual tourism. Yeah, even virtual tourism, you can definitely design virtual tourism for them as well. But again, I don't know yeah, maybe the elders would love to sign up for it. The people who are severely restricted, Japan can be a core market because Japan actually has a very fast aging population. And it's a Buddhism oriented market. Sri Lanka as well. Handmade, so the value of handmade goods in the post-industrial market, Bihar is still on the cusp of industrialization. अभी तक industrialization में घुसा भी नहीं है वो, हम feudal society में बहुत हद तक, ठीक है? अभी भी caste और ये सब बकवास पे हम लोगों का करा करते रहते हैं. But we are on the cusp of industrialization. हम बस घुसी रहे हैं industrialization में. But there are places out there like Mumbai, there are places out there like US, UK, ये जो societies हैं, they have outgrown industrialization. इनकी industrialization खत्म हो गई, ठीक है? तो ये ना these people are tired of mass market products. इनको बस कुछ भी handmade दे दो. इनको मतलब I live in Seattle, US, Starbucks वहीं पे बना है, तो वहाँ पे Starbucks को कोई भाव नहीं देता है. मतलब they are like ये क्या है, मतलब we are so tired of this. और मैं इंडिया में लिटरली वही आती हूँ, मुंबई में my friends are like, oh my god, I want to go to Starbucks. वहाँ पे सब कहते हैं कि नहीं हमें तो वो नुक्कड़ वाली चाय पीनी है, मतलब just translating it in their language, कि I want to go to that French cafe on the roadside and everything. And Mumbai में everyone's like, no, I want to drink Starbucks. क्योंकि अभी Starbucks launch में तो एक trend है खाई पे उसको. But value of handmade goods in these developed markets is huge. Okay, कि आप में से कितनों को Etsy के बारे में पता है? अगर नहीं पता है प्लीज जाके देखिए Etsy.com. ठीक है, it is one of the largest retailers, जैसे कि Amazon है. It is one of the largest retailers of customized handmade goods. So independent vendors जैसे artists हो गए, ये सब हो गए, वो लोग goods बना के वहाँ पे बेचते हैं. And they earn huge profit out of that platform. So again, इसमें हम जयपुर की तरफ देख सकते हैं कि जयपुर ने अपने आप को कैसे मॉडल किया है. Furnitures for export market. I think furnitures is a huge category. बहुत महंगा मिलता है. मतलब इतना महंगा मिलता है. आप बिहार में आपके पास इतना अच्छा लेबर मार्केट है. You can work with them. You can produce very beautiful furniture. You can sell it for at least still 50% cheaper while pricing it 100 times higher than what it is sold here. ठीक है, तो furniture is one of the most important categories. Textiles
टेक्सटाइल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। मतलब आप जयपुर का देखिए, वो ब्रांड्स को बेचते हैं, अर्नीस हो गया, Chanel हो गया, Dior हो गया, these export houses buy from Jaipur। तो हम भी अपने वीवर्स, हम भी अपने आर्टिसंस को ट्रेन कर सकते हैं उस लेवल पे। एंड अगेन एंटरप्रेन्योर्स एनेबल दिस चेंज। वो वीवर्स के दिमाग में नहीं आएगा ये कि मुझे अर्निस को बेचना चाहिए, वो एक एंटरप्रेन्योर ही एनेबल करेगा उस अपॉर्चुनिटी। Okay, so these are some startup ideas for you to explore. Can you go to the next slide? So for this exercise, we build a B2C brand. ठीक है, तो आप लोगों के ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं। आपको क्या करना है, एक आइडिया पे फोकस करना है। अभी मैंने आपके साथ इतने सारे आइडिया शेयर किए हैं, श्योर आपके कुछ आइडियाज हैं, बस एक आइडिया चुनो, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू फिगर आउट कि लाइसेंसेस एंड रेगुलेशंस क्या क्या इस पे अप्लाई करेंगे, इस आइडिया पे क्या क्या आपको चाहिए होगा। आपकी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी कैसे है, आप कैसे मतलब मार्केट जाना चाहते हैं, हाउ आर यू प्लानिंग टू which platforms are you planning to sell, where are you planning to sell, who is your target market। उसके बाद आप क्रिएट कीजिएगा कि आप, सर आप अपने फोन को साइलेंट पे रख लीजिए। उसके बाद आप क्रिएट कीजिएगा, आप उसके सप्लाई को कैसे बिल्ड कीजिएगा, आप उसको कहाँ स्टोर कीजिएगा। D2C में आजकल सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप एक थर्ड पार्टी वेयरहाउस के थ्रू भी स्टोरेज कर सकते हैं। सो I would love it if you can just Google the names of some warehousing support that you can get. It's easily available, third party warehousing services। ठीक है, मतलब अब किसी को प्रेजेंट करना होगा तो just telling you for that। फिर executing that GTM strategy, तो उसको आप कैसे execute करेंगे, communicating। ये ब्रांड ओन मीडिया होती है, वेबसाइट और सोशल मीडिया, इस मीडिया पे आपका कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पे। नाउ अगेन, आप जब एक D2C ब्रांड बनाते हैं और आप वेबसाइट और सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो आपको क्या लगता है आपका पहला ऑडियंस कौन होगा? राइट, बट आप एक $55 million की मार्केट साइज को फ्रेंड्स एंड फैमिली से नहीं कैप्चर कर सकते। So you need ads, affiliate influencers, and other new customers, right? So you need customer acquisition, and that can only happen through advertisement. And then delivery, which is shipping and logistics. आप सेल हो गया, अब आप कस्टमर को कैसे बेचने वाले हैं, मतलब आपकी शिपिंग कंपनी आपकी सर्वे करने वाले हैं, या जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग कोविड आई वाज फोर्स्ड टू बिल्ड माय ओन वेबसाइट। ओके, तो मेरे पास एक चैलेंज था उस वक्त कि मेरे जो कस्टमर्स होते थे, मैं उन्हें कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी कि आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया। सो देन दे वुड गेट रियली एंग्री कि अरे यार तुम लोग बता नहीं रहे हो कि तुम ऑर्डर डिस्पैच हुआ है कि नहीं। तो आई वांटेड अ टेक्नोलॉजी दैट कैन alert them the moment they have placed an order, we have received your order, you will get a supply within 4 days। ठीक है, तो then I finally Shopify में जब मैंने वो बनाया, तो जैसे कि उनका एक इकोसिस्टम होता है, जैसे आपने एंड्रॉइड देखा है, आपने एप्पल का एप स्टोर देखा है, वैसे ही Shopify में भी एक ऐप स्टोर होता है। they have these website plugins। तो Shopify में एक मैंने प्लगइन डिस्कवर किया, तो आई जस्ट क्विक इजी स्लिप करके मैंने उसे बस ऐसे ही इंटीग्रेट किया। तो इट वाज व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि वो क्या करता था कि जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर डाला, वो कस्टमर को मैसेज भेज देता है कि देखो तुम्हारा ऑर्डर रिसीव हो गया, ये सब। एट द सेम टाइम वो मेरी टीम को अलर्ट कर देता है, मेरा टीम यहाँ से मैनिफेस्ट रेज करता है, वो मेरी डिलीवरी कंपनी को नोटिफाई कर देता है कि इस टाइम पे आके ऑर्डर कलेक्ट कर लो। ठीक है, आफ्टर ऑल दैट इज डन, द मोमेंट माय डिलीवरी इज पिक्ड अप, वो कस्टमर को भी नोटिफाई कर देता है कि आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया। ठीक है, तो इतना ऑटोमेट हो गया है ये फंक्शन जस्ट विद वन ऐप। सो जस्ट दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। तो इसके भी एप्स होते हैं, यू कैन ऑब्वियसली गूगल इट, देयर इज शिप रॉकेट, देयर इज हिपो, there are lots of interesting shipping apps that you can avail। तो ये है एक small journey how to incorporate a D2C brand। I'll give you 10 minutes, ठीक है, आप लोग आप में से किसी एक को आके अपनी टीम की तरफ से ये आइडिया प्रेजेंट करें। ओके, हो सकता है?
I cannot hear yes, no. You are the entrepreneur, guys. अगर आपसे नहीं होगा तो किससे होगा? ठीक है? Alright, तो आपके पास से कौन आ रहा है? Team meeting? Okay, cool. खुद के मीन्स कौन सा आइडिया प्रेजेंट करना है? खुद का idea. You have to come up with the idea on your own. आप में से कोई एक आके प्रेजेंट करेगा उस idea को, ठीक है? At least huddle to बनाइए. Like at least huddle together. It will be new idea or the existing idea on which we are working. Whatever you want to say. Actually, don't stay out of discussion. License level. So handmade export. Bigger space. You need a bigger space. You want to go outside and then go to something. No? That team is completely excluded. That's that also. अरे मखाना भेज दो यार, मखाना भेज दो। Proxy पे कोई participation you have to be a part of that. And हमें कुछ नहीं बनाना खाने वाला है बड़ी पेंटिंग एक बार लेके हर वीक खाते जाए उसका कलेक्शन हमेशा बाकी सब वन टाइम हो सकता है इसलिए जो फूड वाला है हमेशा खाना से You have 15 minutes. Within the next 3 minutes, you have to finalize your idea. Sitting here only or by Stand there and present copy. You have to pitch. आपका बेस्ट है बिहार में अवेलेबल है वर्ल्ड का सबसे बड़ा अरे नहीं Anjali, you are not participating. Anjali, you are not participating. Why? We are to register market. You have to participate. आप बोलिए आप Boys, please include your discussion. आगे प्रेजेंट करिएगा Sir, आप उसकी present. एक बार कितना खरीदेगा Sir, थोड़ी खरीदेगा you have to be there. Please present. लिखाओ दिल्ली अरे खाना मिला टोमेटो सॉस 40 फ्लेवर 40 फ्लेवर तो क्या दिक्कत है अनस्किल्ड हाँ मैं बता रहा By the way, the DBU company that I was talking about is called Simba Quads. After this session, you can visit it. Simba Quads. मटेरियल्स के हम लोग उसको प्रोवाइड
बस हो गया Is the idea finalized? What's your idea? Idea is on makhana. So you can sell banana? yes Very nice. What's your idea? What are you selling, guys? I cannot hear, please speak now. बस बात खत्म Idea. Yes. What are you? एक एक सिलेंडर वेबसाइट बना देगा What's this? What's this? सिटिंग What's your idea? I'm art and Art and craft. crafts and food process. सब Thank you. Okay. मैं सब बना दूं। Okay, quickly, Google types that you would need for your product. सब क्या है? Who's the legal person here? कौन है भाई? Rishabh? अरे सर्च कर लो ना लाइसेंस क्या चाहिए लाइसेंस क्या लगेगा आपके आर्ट एंड क्राफ्ट में? ये बहुत सारे हाँ, गूगल करिए गूगल. You have to prevent. Think about the next step. You are looking yours. हो गया हमारा फिक्स हो गया खत्म Oh, you are ready? You are ready? Okay, come present. सर्टिफिकेशन अभी कर दो Metaverse for the win. आइए, please present the idea. Two people can. नहीं, वहाँ पे. पूछ कैसे अच्छा हमने Would you need your mic? प्रोडक्ट You can hear. Okay. क्वालिटी एंड है ना हाँ क्वालिटी ये हो गया सर्टिफिकेट रेगुलेशन वही हो गया अलग अलग हाँ मार्केट स्ट्रेटजी चलिए मार्केट स्ट्रेटजी हम गए आप बोलिएगा साइट पे रेंट कर एक बार करो ना एक ही आराम बस देखना उसी से बोलो ठीक है So we analyze online that will try to sell to the outer market. So as per the geographical location, Bihar is the fit for that location to grow makhana. So we will try to harness कि मखाना को हम और भी अलग-अलग फीचर्स में इसको फ्लेवर्स में ऐड कर सके और इसको हम एक्सपोर्ट कर सके और आउटर एक्सपोर्ट नाम क्या है आपके मखाना ब्रांड का? मखाना बाजार लजीज मखाना वो एक पैटर्न बन गया ना उसको फॉलो नहीं करना है ब्रेक करना है अपने हिसाब से डिजाइन कर So लजीज मखाना का हैशटैग क्या है? मखाना है खाना अपना है तो बेहतर सेकंड टैग इज हरगर मखाना बर्गर मसाला अलग है What are you like? For licenses, first of all, हमें एक company register करना होगा. For this, we choose private limited company क्योंकि उसमें हम लोग investors और काम करने वाले अलग कर सकते हैं. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा सप्लाई खाना का वर्क करेंगे फूड लाइसेंस लेके फसाई लाइसेंस नेक्स्ट हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे अदर सिटीज एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रजिस्ट्रेशन देन एक्सपोर्ट एंड वी नीड एट लीस्ट इनिशिएटिव and more important R&D team so that ये हम लोग टेस्ट का मखाना प्रोड्यूस करें
My suggestion would be to focus on only one flavor and get that right. Because ये mistake हर entrepreneur करता है. They start focusing on too many alternatives and they lose focus on one product. Ultimately, वो product बिकेगा तब आपका brand बिकेगा, right? So let's not make that mistake. Let's focus on one product. First, we'll try to do in such a way so that the quality like it should be maintained on like let's we do the mass production. तो वो क्वालिटी जो है वो रिटेन करना चाहिए, वो टेस्ट रिटेन होना चाहिए, तो अगर एक बार खाए तो उसको दोबारा वही टेस्ट मिले। और आपका वेबसाइट We will use Shopify for that और हम लोग एड्स के लिए फेसबुक ऐड यूज करेंगे। पहले क्रिएटिव ऐड बनाएंगे, उसको बिहार का कल्चर दिखाएंगे कि बिहार से कैसे ये प्रोडक्ट आता है, कैसे बनाते हैं, उनके हाथों से बनाकर दिखाएंगे, इसको फ्लेवर के साथ और टेक्सचर दिखाएंगे। उसके बाद उसको ऐड बना के फेसबुक पे रन कर दिया, देन वी विल शो प्राइमरी logistic system like picker, ये सबसे डिलीवरी पार्टनर हो गए। ऐड रन किया, फ्लिपकार्ट अमेज़न पे भी जाकर के वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। Affiliate marketing. और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो चूज कर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ। ऑर्गेनिकली हम लोग इस पे इन्फ्लुएंसर और प्रोडक्ट पहले स्टार्टिंग पहले इन्फ्लुएंसर छोटे-छोटे टारगेट करेंगे जो 10,000 15,000 फॉलोअर्स हैं, उनके साथ स्टार्ट करिए ताकि हमारा लो कॉस्ट में मार्केटिंग हो सके। उनसे हमने ऐड बनवाए, रील शूट करवाए, उसी रील शूट पर यूज करके हम लोग ऐड रन कर दिए। So basically remote selling Makhana will sell a story. so आप सैम्पलिंग वगैरह भी करिएगा। हाँ, सैम्पलिंग वगैरह भी करना हो। Reputed जो इंस्टीट्यूट है जो ऑथराइज कर सके our quality we will try to get the authorization from there. देन अगर ये अच्छे लेवल पे हो जाए तो देन हम लोग कुछ सेलिब्रिटीज प्रोडक्ट पे ऑनबोर्ड कर सकते हैं जो कि बिहार से 10 लाख करके पार्टी है और आगे टू एडवर्टाइज करना। तो आप एक ऐसे ब्रांड मार्केट में जहाँ पे विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर, आप वहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट? First thing will be our story. That will make us different from what. अरे वो स्टोरी समझ ली उसने। Or you have to make it like the Makhana like get originated from the Bihar. So that story will impact I think. So my question is, आपका स्टोरी में समझ रही हूँ, ठीक है, लेकिन कस्टमर ठीक है, पर आपने मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपने ये प्रोडक्ट बनाया, इसका स्टोरी भी बना लिया आपने, बट आपके पास 10 लाख रुपए ही, ठीक है, तो आप उससे उसमें मतलब आप जैसे स्टोरी बनाया आपने, तो आप उसका मैक्सिमम बजट तो सिर्फ आप उस स्टोरी को प्रमोट करने में तो नहीं लगा सकते, राइट? तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन उसके पैकेजिंग में क्रिएट करना पड़ेगा फॉर अ पर्सन हु डजंट नो दिस, फॉर अ पर्सन जिसके पास वो स्टोरी गया ही नहीं है, और आपका ब्रांड इज जस्ट प्लेस नेक्स्ट टू द विराट कोहली ब्रांड, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए? बिहार का पैकेजिंग में क्योंकि हमारा लेबर कॉस्ट काफी कम है, तो ट्राई टू गो विद द प्राइसिंग आल्सो कि हमारा प्राइसिंग कम है और टेस्ट भी ज्यादा अच्छा हो, बेटर व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग। पैकेजिंग में हम लोग बिहार का कल्चर शोकेस कर सकते हैं। सबसे पहले एज एन एंटरप्रेन्योर ऑफ अ गुड दैट इज ऑलरेडी कमोडिफाइड, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आप बिहार को पर्सनल्स का वैल्यू क्लेम करने में हेल्प कर रहे हैं, जो अभी उसे नहीं मिल रहा ओरिजिनली, राइट? तो प्राइस कम करने का सवाल ही नहीं है, दैट यू लव, ठीक है। दूसरी चीज, आपको स्टडी करना पड़ेगा आपके कॉम्पिटिशन से बहुत केयरफुली, उनके ट्रेडर्स क्या है, उनका क्वांटिटी क्या है, और लोग, एंड देन डू कंज्यूमर रिसर्च कि उनको वो फ्लेवर्स पसंद ही है कि नहीं, उनको वो चाहिए भी कि नहीं। इज देयर एनी मार्केट जहाँ पे वो कॉम्पिटिटर नहीं है, तो या तो आप उस कॉम्पिटिटर का एग्जैक्ट कॉपी बना के उस मार्केट में घुस सकते हैं in terms of flavor profiling and packaging, not copying the brand itself, but just flavor profile and quantities and the nature of the product.
या फिर अगर आप सेम मार्केट में टारगेट कर रहे हैं, आपको ऐसे मार्केट में घुसना है जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी है और लोग खरीद रहे हैं उस चीज को, तो आप एक ऐसा फ्लेवर निकालिएगा जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। आप एक ऐसी साइज लेके आइएगा जो आपके पास कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। केस एन एग्जाम्पल फॉग। फॉग को क्यों पता है? उसने एड्स के साथ क्या किया? एड्स में वो दिखाया वो बॉय सिंगर चिक मैग्नेट, मतलब जहाँ जा रहे हैं लड़कियां चिपकती है उससे एड्स लगाने के बाद। और फॉग ने क्या दिखाया कि ओ देखो हमारे पास ना गैस नहीं है, वी ओनली हैव परफ्यूम। So that is attacking your competitor exactly where it hurts. That is because he knew his competitors. Okay, so that is just one small thing that I can offer you. पैकेट में मखाना है, हवा नहीं। ये लेज वाला लाइन हो जाएगा। Okay, thank you. Anything else? Thank you. Yes sir, हम लोग स्टार्ट एक फ्लेवर से करेंगे फिर जैसे अकॉर्डिंग ऐड करते हैं हो गया यार तुम्हें आइडिया मखाने का सिंपल है क्या अगर मखाना के हेल्थ वैल्यू को बढ़ाया जाए क्यों कहते हैं आपके हेल्थ को सेट करना है, तो ये भी एक अच्छा सेलिंग पॉइंट है। एंड सेकंड वाली चीज आपको लोगों को एक्सपीरियंस कराना होगा ज्यादा से ज्यादा मखाना में ये सब भी डाल तो ऐसे सबसे ज्यादा क्या होता है एक बंदा तो दिस इज काइंड ऑफ ट्रिक्स कि आप कहीं सेलिंग पॉइंट पे लगा लो, कोई मॉल्स में कि मखाना निकल रहा है उसे ग्रैब करो प्राइस है, तो यू आर मेकिंग देम एक्सपीरियंस मखाने का टेस्ट क्या होता है, ये फ्लेवर कैसा है, बच्चे ट्राई कर रहे हैं, तो ये भी एक सेलिंग पॉइंट हो सकता है जिससे हम स्टैंड आउट कर सकते हैं। गोरिल्ला मार्केटिंग सेलिंग पॉइंट हम 10 लाख रुपए गोरिल्ला मार्केटिंग वो विराट कोहली सेल कर रहा है 1 किलोमीटर दूर उसके पास ब्रांड वैल्यू है, लेकिन हो गया ये मखाना जहाँ से तैयार होता है जो वर्कर्स उसमें पानी में घुसते हैं उसको निकालते हैं और वहां से हम उसका जो वीडियो है वो इमोशनली भी सेल करते हैं। इससे बिहार के सर यही तो मैं आपको बता रही थी, ठीक है मैं समझती हूँ कि उस स्टोरी में बहुत इमोशनैलिटी है, बट ओनली फॉर द कस्टमर जिसने वो वीडियो देखा है, जिसने वो नहीं देखा और जो एक ऐसी रैंडम कस्टमर है, मतलब जो एकदम मतलब एक नंबर का आवारा इंसान घूम गया कहीं खाने खाने, उसे कुछ मतलब नहीं है स्टोरी क्या है उसका ये वो, और वो देख रहा है वो विराट कोहली एंड देन सेंस योर ब्रांड, तो वो डिफरेंशिएट उधर क्या सोचेगा? सुपर फूड के खाना को लेकर कि मैम हम लोग से कवर के शॉप करते हैं जो थोड़ा मार्केट बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इन्वेस्टमेंट So you can make a makhana based milk drink. That's a very strong selling point. डेली यूज में भी ला सकते हैं Yeah. डेली यूज में भी उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं मुझे ये भी लगता है कि मखाना is a very export friendly product. It's so light in weight, right? अच्छा हाँ, and it's so light in weight, मतलब कुछ है ही नहीं उसका, कॉस्ट ही बहुत कम आएगा to sell. वॉल्यूम Volume ज्यादा है, I agree, but you can do compressed packaging. बादाम टीज पता है आपको? बादाम टीज नहीं, बादाम टीज का केस स्टडी देखिएगा, उसने बहुत ब्रिलियंटली अपने टीज को पैकेज किया फॉर एक्सपोर्ट मार्केट, दे सेल टू यूएस एंड ऑल दीज मेजर एक्सपोर्ट मार्केट्स, और उन्होंने क्या किया 100 ग्राम का टी का ब्रिक बना बना के उन्होंने दिया है लोगों को, तो यू जस्ट नीड टू ओपन द पैक और वो इनफ्लेट हो जाता है, तो मखाना के साथ यू कैन डू दैट।
Compression. स्नैकिंग ऑप्शन, आप दिल्ली एनसीआर में जाइएगा, आप सत्तू पूरी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वो क्या है कि वो फिर लेवल दिया गया है कि ये बिहारी फूड है, वहाँ पे वो जो है बिहारी नहीं होगा तो वो नहीं खाएगा सब। अरे सत्तू को पी प्रोटीन के नाम से क्या हेल्थ ट्रेंड चला हुआ है। मतलब हमारा जो अग्रेरियन डाइट है जो बिहारी फार्मर्स खाते हैं, दैट इज अ मार्वल, that has the answers to a lot of things that the world is trying to solve right now. Lal chana, pea protein, जो Bengal gram, so high in folic acid, जो pea protein हो गया, that's so easily digestible plant protein. Yes, उसके बाद ये मखाना of course. So just few of these examples, right? Okay, I'm sorry, we have kept the other team waiting. नेक्स्ट मैम, हमारे प्रोडक्ट है होममेड, जो कि बिहार आर्ट के नाम से जाने जाएंगे। बिहार आर्ट, आर्ट फ्रॉम हार्ट, जो कि That's your टैगलाइन। और जो भी बिहार में कॉटेज इंडस्ट्री में जो भी फर्नीचर जो आप बता रही थी, ऐसे जो भी प्रोडक्ट है उनको हम सेल आउट करेंगे। मुझे वैसे आंसर्स नहीं सुनने हैं, मुझे एक कैटेगरी बताइए। सस्टेनेबल बैम्बू प्रोडक्ट्स, प्लीज सर। Actually, मिथिला पेंटिंग, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, मिथिला पेंटिंग कैटेगरी हो गया। सस्टेनेबल बैम्बू मैं अगर एक रैंडम कस्टमर हूँ तो मैं आपको कौन से प्रोडक्ट के नाम से जानूंगी। अरे एक फर्नीचर लेना है तो मैं बिहार के पास जाऊँ, क्या मतलब फर्नीचर मैंने furniture बोला तो You decide. ऋषभ, तुम्हारा प्रोडक्ट है ना बैम्बू प्रोडक्ट, सस्टेनेबल है, हैंडमेड है। ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, वैसे ये बैम्बू से बने हुए प्रोडक्ट्स है। तो हम लोग जो बिहार आर्ट उसको फॉर्म करेंगे तो वो हम लोग का सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स रहेगा। वो मैं समझ रही हूँ। हाँ, एक प्रोडक्ट बताइए। हाँ, बैम्बू ही से बने हुए प्रोडक्ट्स है। बैम्बू से बने हुए कौन से प्रोडक्ट? प्रोडक्ट्स लाइफस्टाइल में कौन सा प्रोडक्ट? ब्रशेस रहेगा, Forms. ये बॉटल्स रहेंगे, सर 10 लाख में से 8 लाख इन्वेंट्री में रोकने का है। मैम वो कैटेगरी उसी में आएगा। वन प्रोडक्ट ब्रशेस ब्रशेस में आप बिहार आर्ट कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? मैम, क्योंकि उसमें बैम्बू जो बैम्बू के ब्रशेस रहेंगे उसमें हम लोग मिथिला पेंटिंग का उसमें वो टेक्सचर दे सकते। जो उसके हैंडल है, जो ब्रश के जो हैंडल्स रहेंगे उसमें वो मिथिला पेंटिंग का वो रहेगा, टेक्सचर। इसका फाइबर आई थिंक आप बिहार का जैसे आप प्रमोट करना चाह रहे हैं तो हियर अ बेटर फिट वुड बी नीम, जो दातुन होता है ना, तो नीम इज वन मोर नेटिव इंस्टेड ऑफ बैम्बू। बैम्बू प्रोसेस भी है और उसमें ही नीम का भी है, वो सारे मतलब कि उसी कैटेगरी रेंज में कैटेगरी पेंट नहीं बनाते। चलिए ठीक है, आप बेसिकली मैं ऋषभ का कैटेगरी और प्रोडक्ट उनके लिए डिजाइन कर देती हूँ, ठीक है। He wants to sell the बिहारी लाइफस्टाइल जो फार्मर्स वो दातुन यूज करते हैं, हम उनसे उससे इंस्पायर्ड हम ब्रशेस क्रिएट करके ओके। Please don't take this lightly, guys. This is a very serious exercise. I really would like you to be extremely professional about this. What we do, like अगर मेरा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है, तो प्रोडक्ट को हम लोग खास करके जो बिहार के ही बाहर लोग रहते हैं उनके थ्रू हम लोग मार्केट में जाएंगे
कि हाँ बिहार में इस तरह का कल्चर ऑलरेडी था बहुत पुराने जमाने से, और कहीं कहीं अभी जाके इसको मतलब कम रहा है, इसको कैसे प्रमोट किया जाए डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में। तो इसको हम लोग मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको सेलेक्ट करेंगे। कौन से वेबसाइट को कौन से प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट का नाम हुआ ये बिहार बिहार bihar.com. Okay, and आपका hashtag हैशटैग हो गया आर्ट फ्रॉम हार्ट। art from heart. Okay, and आप कौन से प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बनाइएगा? मैम ये स्पॉटिफाई और ये दुकान हाँ ये शॉपिफाई और दुकान Shopify और दुकान। दुकान भी है मैम और उसी के रेंज में काम करती है Okay, I didn't know that. That's मैम। वो उसमें मतलब कि उसी प्रोडक्ट रेंज में जो ज्यादातर आर्ट एंड क्राफ्ट में है वो काम। alright. और आप लोग कहाँ पे store कीजिएगा products को? अलग मैम हम लोग का अलग अलग लोकेशन रहेगा, जैसे कि हम लोग जैसे फर्स्ट में जो बिहार का ही है तो फर्स्ट बिहार से हम लोग शुरू करेंगे एज ए मार्केटिंग। सर बिहार को मार्केट आप नहीं बना सकते, चाइना ने दुनिया को ऐसे नहीं जीता है चाइना में बेच के प्रोडक्ट्स। मैम फर्स्ट हम लोग कुछ तो हम लोग अपने जो ये पटना में जो सिटी है तो उसमें हम लोग कनेक्ट कर सकते सर बिहार इज नॉट द मार्केट, मैं आपको लिख के दे देती हूँ, आप डिस्करेज हो जाइएगा। हाँ वो बोलेगा मैं क्यों बिहार के लोग बाहर रहते हैं ना, वो हम लोग का मतलब मेन वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज होता है, उधर नहीं जाना। आप बिहार का एंकर छोड़िए, जब आप मार्केटिंग में आते हैं तो मार्केटिंग इज फ्रॉम बिहार टू द वर्ल्ड, इट्स नेवर फ्रॉम बिहार टू बिहारी, ऐसे नहीं होता है। बिहारी के रीच आउट करें और मतलब उनको पता रहता है प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी, कलेक्टर्स को कुछ कलेक्ट करेंगे इनसे, उनके तो हम लोग मतलब एक पॉइंट ऑफ इस आइडिया एक्चुअली मैंने देखा है इस आइडिया को, मैंने साउथ कोरिया, मुझे वहां पे किसी ने ये आइडिया दिखाया था, उसमें इसमें आप एक की डिफरेंशिएटर ऐड कर सकते हो, आप इसमें टूथपेस्ट इनबिल्ट बना सकते हो। तो वो के लिए ड्रग स्टोर में यू नो सम पीपल डिड मिस आउट कि उनके पास टूथपेस्ट नहीं होता है, वो तो ये एक रेडीमेड टूथ वाला ब्रश होगा दैट दे कैन यूज एंड डिस्कार्ड इजीली 1-2 यूजेस के बाद, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का बना हुआ है। जब कोई बात ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ विनिंग आइडिया, पूरी दुनिया काम कर रही है इस पे एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम टू सॉल्व, देयर इज सो मच प्लास्टिक वेस्ट दैट इमर्जेस फ्रॉम टूथब्रशेस, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो इसको बस हल्का सा शार्पन करना और अपना मार्केट समझिए, बिहार के नॉट बी अ मार्केट। वो तो हम लोग जाएंगे, जो हम लोग अगर इसमें मतलब कि शॉपिफाई और इसमें दुकान पे कर रहे हैं तो एड्स के थ्रू और मतलब कि जितना भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनके थ्रू हम लोग अपना रीच आउट कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। और शिपिंग के लिए आपने आइडेंटिफाई किया आप कौन से आपके साथ काम करना चाहिए, कौन? शिप रॉकेट मैम। शिप रॉकेट, okay, great, thank you, can we have a huge round of applause for both of you? Bihar and Makhanan, क्या लजीज मखाना, yes, अर्गन मखान। okay, thank you, can we go to the next slide? आप लोग प्लीज बैठे। So I just want to now come back to the presentation. अभी आप लोग तो मैंने ऑब्वियसली थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश की आपके आइडियाज में, आई एम सॉरी फॉर दैट, आइडियाज बहुत प्रेशियस होते हैं हर फाउंडर के लिए, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर आप वो मिस्टेक्स ना करें जो मैंने किए, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक्स बहुत कॉस्टली होते हैं, ओके, और उससे भी कॉस्टली फेलियर होता है, सो दैट वी वांट टू अवॉइड एट ऑल कॉस्ट, ओके। सो थियरी वर्सेस एक्सपीरियंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ 4 P's क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, एक साथ पैकेजिंग, पैक,
Product, price, place, भाई एक मिनट, धीरे धीरे। product, price, place, packaging, और दो और। profit. ओह that was 7। उसके पहले दो और है। उसके पहले कौन सा? Motion. हाँ, Promotion, और very important place, people. people, yes। So मैं आपको कहूंगी कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब खड़े हो जाने चाहिए आपके दिमाग में कि ये प्रोडक्ट बेचना है, इस प्राइस पे बेचना है, इस इंसान को बेचना है, इस जगह पे बेचना है, इस पैकेजिंग में बेचना है। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा ना सर, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जो चीज आप 10 रुपए में कर सकते हो वो आपको 15 रुपए लगेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन इन दोस केस। तो थियरी और एक्सपीरियंस में मैंने सीखा है कि इन दोनों चीजों का जो मिलाप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 4 P's वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑब्वियसली द अदर 3 P's as well। ओके, दूसरा द डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन। जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी डिसरप्ट हो गया है, राइट? अब देयर इज नो मोर की स्टॉकिस्ट, रिटेलर्स, बहुत ही मतलब मिडिलमैन है, अब नहीं, अब कस्टमर डायरेक्टली ब्रांड से बात करता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन बिहार टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये डेवलपमेंट हम तक बहुत लेट पहुंची थी। ठीक है, तो हमें ये अभी समझना पड़ेगा बीइंग एंटरप्रेन्योर्स कि अब डिस्ट्रीब्यूशन पहले जैसा नहीं चलता। फार्मा में चलता है, फार्मा में भी कुछ हद तक वो डिसरप्ट हुआ है और होगा भी आगे, बट उसमें समय लगेगा। लेकिन कंज्यूमर गुड्स में तो हो गया, कोविड ने तो मतलब कर दिया सबका काम अच्छे से। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिकॉग्नाइज। वेरी इंपॉर्टेंट, द आर्ट ऑफ फ्रुगैलिटी। पैसे बचाना एक आर्ट है, ठीक है? तो एंटरप्रेन्योर क्या है? राइट, तो एंटरप्रेन्योर इस चीज का आर्टिस्ट है, ओके? कि पैसे बचाना, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू मास्टर। 10 लाख रुपीज में स्टार्टअप क्रिएट करना नॉट इजी, बट एक आर्टिस्ट अचीव कर सकता है इस चीज को भी, ओके? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने सीखी है बीइंग बिहारी, हमें बचपन से रेज किया जाता है वेरी कॉम्पिटिटिव माइंड से। ठीक है, हमें सिखाया जाता है कंपटीशन दो निकलो, ओके? पर आप लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड फॉर दैट माय सल्यूट टू यू। आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है? मैंने बिहारी में बहुत देखा है, एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव, उनको हमेशा लगता है मैं तो इससे बेटर हूँ, मैं तो इससे नहीं, वैसे दुनिया नहीं चलती। सॉरी सर, लेकिन कंपटीशन दे दे के निकलने से आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको नेटवर्किंग चाहिए, आपको कोलैबोरेशन चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए मेंटर्स से, और ये आपको एक बिजनेस एनवायरनमेंट से खाएगा। एंड अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आपने ये चीज अब तक सीखी नहीं है तो आप सीख लीजिए, क्योंकि आपको उस माइंडसेट में घुसना पड़ेगा जहाँ पे आप कंपटीशन वर्सेस इंस्पिरेशन, जहाँ पे आप लोगों को देख के चलिए मत, आप उनसे इंस्पायर होइए। अगर कोई सक्सेसफुल है, क्यों सक्सेसफुल है पूछिए, क्योंकि आपका कोई बॉस नहीं है, आपकी बॉस आप नहीं है, राइट? यू आर इन अ सेल्फ लर्निंग एनवायरनमेंट। तो सेल्फ लर्निंग के लिए यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली क्रिटिकल ऑफ योरसेल्फ। ये मैंने सही नहीं किया, ये मैंने सही नहीं किया, ये ऐसे नहीं किया, ये वैसे नहीं किया। आगे बढ़ना है तो बी क्रिटिकल, नेवर गो इनटू कंफर्ट जोन, एंड ऑलवेज 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 नेटवर्क। मतलब मिलते रहिए, लोगों से बात करते रहिए। एक स्टार्टअप इंट्रोवर्ट बन के नहीं चलेगा, दैट्स द रियलिटी। हासिल करना पड़ेगा, इस दुनिया में आवाज करनी पड़ेगी, तब लोगों को समझ में आएगा क्या कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं। जैसे कि और स्पेशली मैं ये यहाँ पे बैठी जो फीमेल फाउंडर है, जो अपने को फाउंडर के पीछे बार बार छिप रही है, मैं उनके लिए कहना चाहूंगी, being one of the only women in the room, ma'am, you are representing a lot of. I'm not the founder, I just I do. कोई बात नहीं, you are the only woman in the room, and I want to see you participate more. You are representing many women in Bihar in this room. ये जो business community है, इसमें मेरा ये learning period है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा भी लर्निंग पीरियड है,
I am also not like very peace maker. It's okay. Everyone is learning. You are allowed to be stupid. You are allowed to think. It's okay. But make noise. Wherever you are, let people know you are there. Because that is how you will register your startup in their minds. Okay? मतलब जाने के पहले मुझे मेटावर्स याद हो गया है. ठीक है? 3-4 लोगों ने मुझे लाइन से बोला है मेटावर्स मेटावर्स मेटावर्स. दैट्स फ्री पब्लिसिटी. क्या जा रहा है? ठीक है? इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप. ठीक है? इवन इफ यू स्टार्टअप फेज आपने देखा तो वो इनका फ्लैट हेड्स के फाउंडर का Shark Tank पे how humble he was. He said it's okay if my startup is not working, I'll give up, I'll go back, I'll learn, right? तो मैं कह नहीं सकती कि कितना important है कि आप सीखिए. कोई बात नहीं अगर आपके काम उस लेवल पे पैसा नहीं जनरेट कर पा रहा, कोई बात नहीं. इंटर्नशिप मिले, फ्री वर्क एक्सपीरियंस मिले, कुछ भी मिले, सीखिए कि बिहार में नहीं मिलती है अपॉर्चुनिटीज. ठीक है? तो आपको अगर मिलती है कहीं से grab it. Okay, that's something that I would like to emphasize on. So next slide. And now, lastly, I would like to end with this slide. This is my favorite slide. Women are the most underutilized resource in our country. In Bihar, there are 918 women to every 1,000 men. That's not less a statistic. ठीक है? पर कितना participation होगा उनका workforce में? 5%. Right? 58% population है हमारा working age की. 15 to 58 years. We are a very young population. All right. So, and still we are one of the most highly unemployed states. Still we are one of the most garib states. Still we have such low participation rates from women. That's an alarming statistic. They are one of the most untapped resource of our economy. So there are several men sitting here and there's a woman sitting here. To you guys, I'd like to say कि जब भी शादी हो आपकी, अगर वो भी गई है, please make sure that your wife works and she contributes to the economy. Please make sure. और जो और अंजलि हमारे साथ यहाँ बैठी है और मैं भी हूँ, I am also over here. We have to make sure that we do not stop working. Okay? Because if we do not participate, our state will not go ahead. Our country will not go ahead. So we are one of the most untapped resources in our country. आप as employers consciously auto पे focus कीजिए as market consciously. क्योंकि usually you know our economy treats women as consumers. इनको बेचना है द्वारा. पर हम उन्हें कभी as a creator नहीं देखते. So women can be very good creators. They can be very strong creators. Please collaborate with them. Please encourage them to be a part of the workforce. So with that, I'd like to end this presentation. Thank you. I'm open to all your question answers now. Any questions, any answers regarding your startups also you can ask. How to recognize our target customer and how to reach? How to recognize our target customer? Who can be our target customer? How to recognize and how to reach them? What is the easiest means and easiest means to do? अभी आप कौन से प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं? अभी तो ये ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म ही बना रहे हैं. आप बना रहे हैं तो यानी आपके पास डेटा नहीं है अपने कस्टमर्स पे. हाँ, कॉपी में है. कॉपी में है मतलब हम लोग डायरेक्ट कस्टमर को ही देखते हैं, इसलिए कस्टमर का पूरा डेटा मेरे पास है. रजिस्टर. तो डिजिटाइज का डेटा सी कि कितनी औरतें हैं, कौन से एज ग्रुप में है, कितने आदमी हैं, कौन से एज ग्रुप में है, कौन से लोकेशन से हैं, वो जीरो इन करते जाइए और फिर आपको एक प्रोफाइल मिल जाएगा कि मुझे औरतों से इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन सबसे ज्यादा सेल रहा है. दे आर माय कस्टमर. ओके. और एक वो तरीका है दैट इज बॉटम अप
for businesses that are already running, and another is a top-down approach. Okay, top-down में हम एक total addressable market से शुरू करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये यूजुअली जिनके पास खराब पैसा होता है और जो VC फंडेड बहुत ही एक्सट्रीमली VC फंडेड होते हैं वो ऐसे देखते हैं चीजों को, क्योंकि फॉर देम दे जस्ट वांट टू रीच द मैजिक नंबर। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ओके मैं इंश्योरेंस मार्केट को देखूंगा, टोटल कितना बड़ा मार्केट है, 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 500 करोड़ 100 करोड़ 1000, मैं देखूंगा 1000। इसमें से मैं देखूंगा कि सबसे ज्यादा 1000 करोड़ कौन से प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, कौन से कंट्री से आ रहा है, कौन से रीजन से आ रहा है। फिर मैं देखूंगी कि वो कौन से जेंडर से आ रहे हैं, और जेंडर में उस पर्टिकुलर जेंडर में वो कौन से एज ग्रुप से आ रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर आप एक और मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, जब भी आप एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड बनाएंगे हमेशा यंग जनरेशन को लेना, क्योंकि यंग जनरेशन एक ऐसा जनरेशन है जो बात बहुत करता है डिजिटली। ठीक है, तो वो तुरंत शेयर करने लग जाएंगे, ओ दिस इज सो नाइस, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, ये वो, और वो इट विल कैच, और आपके पास बहुत रिलेवेंस के लिए आपके पास बहुत टाइम रहेगा, क्योंकि वो 20 साल का इंसान जब तक 40 50 60 70 का होगा तब तक आपका प्रोडक्ट रिलेवेंट रहेगा। Did I answer your question? Yeah. Do you have any confusion? You confuse me for elaborating it more than. मेरा क्वेश्चन है, ये चाइना तैयारी का वहाँ प्राइस बहुत कम करके सामान दिया, और फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी इंडिया में सिस्टम को चाइना चाइना उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी प्राइस कम सर इंडिया में ऐसा बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि चाइना अपने वर्कर्स को फोर्स करती है टू वर्क एट अ सर्टेन वेज। 20 रुपए से वो 40 रुपए नहीं कर सकते। इंडिया में प्रोडक्ट यूनियन खड़ा हो गया है, तो ये सर संभव है, वही क्वेश्चन हम लोग बोलेंगे ठीक है आप क्वांटिटी बढ़ा दो। China specifically has a very high rate of entrepreneurship। जो हम लोग यहाँ पे इंडिया में एक बहुत ही बकवास सा कोर्स बनाते हैं, SCW बोलते हैं, सोशली यूजफुल प्रोडक्ट। वो जो है वही होम साइंस कर लेती है या कुछ इस तरीके से वो हमारे कोर्स में डाल देंगे। चाइना में क्या है, चाइना में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग चाइल्डहुड से जो है सो उनको प्रोडक्ट डेवलप करने की ट्रेनिंग देती है। उनके स्कूल्स में भी इस तरह की ट्रेनिंग होती है जहाँ बच्चे फिजिकली प्रोडक्ट बना करके सेल करते हैं, और आप देखेंगे तो गली गली पूरा किलोमीटर जो है फैक्ट्री बना कर रखती है। तो वहां पे जो हम जो फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, वो बहुत कुछ इस एरिया में हम लोग अगर बिहार की बात करेंगे तो हमारा माइंडसेट यहाँ पे बहुत फिक्स है कि हमको पता लगे। जैसा उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इस सबसे छूटे तो फिर जो है सो मान लीजिए आप PO बना देंगे, बैंक बना देंगे, हम कहाँ उस चीज में जाना चाहते हैं। अगर वो माइंडसेट आ जाए इंडिया में, अगर हम इसी स्टेट की बात करें, बिहार में अगर ऐसा माइंडसेट आ गया तो हम डेफिनेटली कॉस्ट जो है किसी भी चीज के लिए आप मास में जब प्रोडक्शन करते हैं तो आप उसका प्राइस कम करें किसी भी चीज का। इस चीज को अगर हमको 100 बनाना है हम इसका प्राइस जो डेफिनेटली करेंगे, इसको मास प्रोडक्शन करने लगे या खास कर मास प्रोडक्शन करने लगे, इस मॉडल का मास प्रोडक्शन करेंगे तो प्राइस जो है उसको तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, आप कितना बेच पाएंगे। और खास करके आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्टर का तो हमको मास प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, तो चलिए बहुत कुछ। Let me just say one thing here कि companies are now very interested to ship to India because वो बहुत harass हो चुकी हैं, चाइना काफी बिलीव करता है companies को, so there is a huge opportunity that and scope for them to now come to India. One more question, because related to my first question, my both work, my internet and my organic food products both are main customer of my products are Indians. How to reach them? You are a better question
फीमेल को आप कहीं से भी सबसे पहले तो आप जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड रिटेल स्टोर्स को आप फोकस कीजिए। आप वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखिए कि आप कैसे रीच कर सकते हैं। मुझे ये जानना है कि आप प्रीमियम इन सेंस सेल कर रहे हैं कि आप लेस प्रीमियम सेल कर रहे हैं। लेस प्रीमियम, हाँ, तो जा सकते हैं जनरल ट्रेड में आराम से। जनरल ट्रेड स्टोर्स हो गए, किराना स्टोर हो गए, ऑल ऑफ दिस उनके मेन बायर्स तो विमेन ही होते हैं अल्टीमेटली। एंड ऑनलाइन में मैं अभी नहीं सजेस्ट करूंगी आपको, क्योंकि ऑनेस्टली ऑनलाइन इज अ वेरी पेशेंस गेम। तो अगर आप पैसा डाल रहे हो तो यू बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉसेस टिल 6-7 months बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग एनी मनी। डेटा देगा वो आपको पूरा, आप टारगेट भी कर पाओगे औरतों को, लेकिन 6-7 महीना आपको लगेगा तो रियली स्टार्ट मेकिंग मनी। और हाँ, एंड देयर आर आल्सो दीस किटी पार्टीज एंड ऑल, बट वहाँ पे कब मैंने अगरबत्ती बिकते देखा नहीं है। तो you can start with general trades and modern trades. Question online. माइक लेके आ जाओ आप। So he's asking कि how do I know? So ये हर एक entrepreneur का प्रॉब्लम होता है कि मैं खुद करूँ या मैं दूसरे को दे दूँ, ठीक है? तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि जब तक आपको नहीं लगता कि आपकी टीम जीत रही है, आप टीम बताना पहली बार शुरू भी मत करो, ठीक है? यू आर द प्लेयर इन ऑल पोजीशंस, आप मिडफील्ड भी खेल रहे हो, बैकफील्ड भी खेल रहे हो, फ्रंट भी खेल रहे हो। Then when you start understanding how the game is played, तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा आपको कहाँ पे रहना है, and then slowly you can start allocating work to other team members and you can start adding people. Obviously उसके लिए आपके business को momentum की जरूरत होगी, and until unless you do not understand every small aspect of your team, I will suggest you not delegate it. क्योंकि पहले अगेन मैंने ये गलती की थी, मैंने टीम बना ली थी पहले before understanding how the game is played. Thank God COVID happened. Thank God I learned how I have to do everything honestly. And that I do not need a lot of people to help me with it. ठीक है? तो वेबसाइट में फॉर एग्जाम्पल शॉपिफाई जैसा अमेजिंग ऐप था और मुझे लेजेंडो पे क्लिक किया और उसमें फिर देवर लाइक वो नहीं, अब हम तो इसमें 20,000 आपसे मेंटेनेंस देंगे हर महीने। आई वाज लाइक एंड आई वाज गेटिंग फुल राइट फॉर अ होल 1 year until I realized I don't need Magento. I just need Shopify and I can edit this on my own. It's like Facebook, it's like Instagram. So no, yeah. So it's like, you know, अगर आपको कोई कहता है कि हाँ ये मैं आपको करके दे दूंगा ये वो, लाइक हाँ ठीक है मैं पहले खुद करके देखूंगी देन आई विल आस्क फॉर इट। अगर नहीं होगा तो मैं उनके लूंगी, क्या जाएगा, ठीक है? तो लोग बहुत उल्लू बनाएंगे मार्केट में। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई एंड डू ऑन योर ओन फर्स्ट। सो या देयर इज अनदर क्वेश्चन, How to reach out for any employee whose qualification is higher than understand what would be relevant to them. And entrepreneurs, you are sales people first. Okay? आपको बेचना है, अपने आप को बेचना है, प्रोडक्ट को बेचना है, कंपनी को बेचना है। तो मतलब कोई खड़ा कर दे आपको नींद में, you should be able to be like हाँ clean and sense products, amazing, let's try it, we'll change the way you live. ठीक है? आंख बंद करके you should be able to convince them to buy what you are selling, right? So similarly, अगर आपके पास कोई आता है कि आपको ऐसा लगता है ये PhD है from this college, तो ये नहीं उसको कहना कि come join me. You have to be like, if you will join me, I'll give you to work on this problem which will help you in your research. Okay? You have to pitch what is relevant to them. और हर किसी का पर्सनल मोटिवेशन बहुत अलग होता है, ठीक है? कोई इंसान पैसे से मोटिवेटेड होता है, कोई इंसान इक्विटी से मोटिवेटेड होता है, कोई इंसान प्रॉब्लम से मोटिवेटेड होता है, हर किसी का होता है। आप अर्ली स्टेज स्टार्टर्स हो, लोग आपके पास इक्विटी के लिए आएंगे, ठीक है? तो आई विल सजेस्ट डोंट बी टू जेनरस आल्सो,
कमर संभल के tread very slowly. I have one more question. Like we are working in the medical education domain, like creating the simulations for disability to help in surgery and this kind of thing. So what will be the top down or bottom up like approach? How to like get that industry and get the customer both way? टॉप डाउन का अप्रोच ये होगा ना सर कि नंबर ऑफ सर्जन्स कितने हैं इंडिया में टू स्टार्ट विद और एक आपको एस्टिमेट मिल जाएगा ठीक है देयर आर लाइक 7,000 सर्जन्स इन द कंट्री एक्टिवली एंड सो मेनी व्हिच आर गेटिंग ट्रेन्ड अक्रॉस सो मेनी कॉलेजेस तो उससे आपको टोटल एड्रेसेबल मार्केट मिल जाएगा फिर आप डिजाइन करोगे कि ठीक है मेरे पास मान लो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है ऑफ 1 लाख सर्जन्स मैं इन 1 लाख सर्जन्स को किस तरीके से रीच करूंगा कॉलेजेस रीच करूंगा तो सेमिनार्स रीच करूंगा थ्रू टाइप्स विद कंपनीज रीच करूंगा यूजुअली जो ये सर्जरीज होते हैं दैट आर लाइव टेलीकास्टेड दे आर यूजुअली फाइनेंस्ड बाय मेडिकल सर्जरी कंपनीज ठीक है जो टूल्स बनाते हैं वो लोग फाइनेंस करते हैं जी आप उनके साथ भी टाइप कर सकते हैं they would love it would save them so much cost right it's like पहले उनको बिजनेस क्लास का टिकट देना पड़ता था स्टे देना पड़ता था पार्टी कराना पड़ता था just to get that you know intel out there to the doctor अब वो डॉक्टर को within the clinic बता सकते हैं yeah did that answer your question And one more question, like आप इस field से मतलब आपका background है, so what we can do with use of VR in this field? अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि जहाँ पे और भी valuation create किया जा सकता है, कुछ और चीजों पे like therapy, rehabilitation, any kind of thing, so. See, pharmaceutical में I don't know, maybe you can get into patient therapies. You can work with hospitals to stimulate relaxation and all that. अभी मैंने recently US में एक product खरीदा था Muse. Okay, it's a brain sensing headband. वो basically मेरे brain को read करता है, मेरे brain की waves को read करता है. वो मेरे brain के waves को read करता है and accordingly it suggests meditation to me. If I'm too anxious, it suggests okay, now we do extremely powerful meditation. If I'm too depressed, it will suggest we do a very revitalizing meditation. तो इस तरीके से वो मेरे मूड को एडजस्ट तो सिमिलरली आप VR में भी कुछ ऐसा पेशेंट थेरेपी के लिए ला सकते हैं कि you know if somehow you have a sensor that can predict patient mood. Okay, now this person is about to get into postnatal depression. Sir, can you please put your phone on silence? If you have a patient that's about to slip into postnatal depression, so you know उसको आप कैसे stimulate कर सकते हो to come out of it. तो ये सब चीजें there are some things like that which you can do. You can also simply look at hospital tools for people. You can also look at factory tools. As pharma companies, we would be very interested in क्योंकि क्या होता है कि we will have to seize the mobile phone next time we find someone. Sir, we have to be extremely professional. Okay, not for me, not for you, but for Bihar, please. Okay, so अभी जैसे हमने जैसे एज फार्मा कंपनीज जो हैं हम वी आर इंटरेस्टेड कि हम ये फैक्ट्री इंस्पेक्शन टूर्स ऑर्गेनाइज कर सकें ठीक है तो फैक्ट्री इंस्पेक्शन टूर्स के लिए हमें इंस्पेक्टर को बुलाना पड़ता है उसे होस्ट करना पड़ता है we have to go through all of that elaborate process अगर if we can cut that short and just create a really nice factory tour for them from the comfort of their countries. Nothing like it. Factory tours, hospital tours. Think about how you can take regulatory people to, to that place. For example, हमारी sales team भी है. Hi, this is Mr. Prabhat. He is the district sales manager for Aishwarya.
He is Mr. Naveen, he is the regional sales manager. So, for example, ये जो strategy create करते हैं, ये pitch करते हैं, we tell the doctor कि oh we are manufacturing companies, so इसके लिए हमें corporate videos बनाने पड़ते हैं, ये सब बनाने पड़ते हैं. I can only imagine if अगर हम एक factory tour का proper एक virtual reality वो simulation create करें, तो उनके लिए वो काम बहुत easy हो जाए. You know, just to show the doctor कि हमारी factory कैसी लग रही है, जहाँ पे products बन रहे हैं. Oh, you can also manufacture this product with us. Come, I'll show you the technology, how it works. Oh, this is a blow film seal technology. This is something that you can try. And any other questions? Very interesting question. How to reach out for any employee? This I have already answered. Yes, I said कि basically you have to look for what is relevant to them. Okay. Anything else? I've solved all the problems in the world. Yes. How do we start a family? So very important. There are many pharmaceutical companies in India. But ultimately, I foresee that going forward, it is ultimately the people who have A to Z control on their drug that can command value in the market. Because low talcum powder के भी tablets बना रहे हैं. So until unless you are out there really manufacturing your own products, really so very stringent about your quality processes, making quality medicines, I think then you have a huge scope. Ultimately, जितने भी value added medications हैं, they have already been claimed by top of the tier companies like Sun and all these companies जो काफी साल से हैं इस market में, तो उन्होंने दबाव बना के रखा हुआ है suppliers vendors पे, so very deeply ingrained ecosystem that is severely regulated by players everywhere. एक interesting case study है which जो अमेरिका में काफी चल रहा है. You can read about this brand called Gilead. पता है इसने वैक्सीन निकाला था सबसे पहला SARS-CoV-2 का. Gilead, GILEAD. इस ये बस 33 products बेचती है with a profit of $20 billion. So that is a model which you should be interested in as entrepreneurs. आजकल अमेरिका में एक और trend चल रहा है, वो है sorry, not profit, revenue. Profit नहीं है उनका, revenue है $20 billion, 33 products approximately. अमेरिका में एक और trend चल रहा है and that is of bio. आपको ये कंपनी पता है मॉडर्ना पता है ना? तो अमेरिका में ये बायो लाइफ साइंसेस वाले जो कंपनीज हैं ये बहुत फंड हो रहे हैं. सो दे बेसिकली स्टडी की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पे हम कैसे अकॉर्डिंगली हम इंटरवेंशंस इंट्रोड्यूस करके हीलिंग या मेडिकेशन क्रिएट कर सकते हैं. जो मॉडर्ना की वैक्सीन थी वो क्या उनका ये था कि बेसिकली जो प्रोटीन रिसेप्टर था जो जब वो इंजेक्ट होगा तो वो उसके इन्फेक्टेड सेल से अटैच होके और वो हील कर देगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेल को, या इट विल चेंज द एंटायर स्ट्रक्चर. उसका कुछ ऐसा था कि वो बायो मॉलिक्यूलर लेवल पे वो पूरे स्ट्रक्चर को सेल स्ट्रक्चर को चेंज करके एंड इट विल कूल द वायरस, ठीक है. आरएनए, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है. तो वैसे ही उस पे जो कंपनीज काम कर रही है ना, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन दैट. दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि आरएनए पे क्या क्या काम हो रहा है एंड वहाँ पे व्हाट आर द न्यू इनोवेशंस दैट आर हैपनिंग. दोस आर द वेरी हाई रिस्क कंपनीज एज वेल. मतलब इट इज नॉट मतलब जरूरी नहीं कि हर कंपनी सक्सीड हो जाएगी इस स्पेस में, बट पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड. Another space is blood microbiome. People are very interested in the way you poop
Yes. People are studying foods क्योंकि food is ultimately the largest giveaway of your health. तो लोगों ने बकायदा लैब्स बनाए हुए हैं कि आप उन्हें भेजिए and then they will study that, then they will tell you. And they are also coming up with a technology कि आप जो cook करते हैं वो उसी से study करके they will be able to tell you कि आपका health कैसा है. So yes, those are the things yeah जो healthcare में innovation है. Yeah, it's possible. ठीक है. हाँ. Do you see the medicines or personalized हो जाते हैं point of care के आगे चल के कि as per patient की demand या उसके dentistry को समझते हुए जहाँ पे consultation हो रहा है कि उसके लिए जो दवा सही है जो dosage सही है वो उसी तरह मिल सके. Do you mean कि वो वहीं पे उनको दिया जाए या do you mean कि मतलब does the doctor act as a dispensing point? Do you mean that or do you mean कि जो होम्योपैथी में डॉक्टर कस्टम मेडिसिन बना के देता है वैसे होम्योपैथी वाला पार्ट पॉसिबल है सर क्यों नहीं पॉसिबल है ब्रेक डाउन हो सकता है मेडिकेशन का बट आई डोंट सी कि वो इमीडिएट ट्रस्ट गैदर करेगा ठीक है सो टिल देन वी आर स्टक विद मास मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स ओनली बट अल्टरनेटिव मेडिसिन में ये चीज हो रही है एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट आप अपने स्टार्टअप में वो एक स्ट्रीम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जस्ट टू सी कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं लोग वैसे आपके स्टार्टअप में आप सिर्फ डॉक्टर्स को टारगेट कर रहे हैं ना लाइक एलोपैथिक सो व्हाई नॉट होम्योपैथिक एंड अल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर्स लाइक आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी We are looking at cooperate with Ayurveda. होम्योपैथी में थोड़े लोग हम उस दवा को लेके तक क्या करता है जैसे एक नया मार्केट अलग स्टॉक ट्रेंड लगती है तो इसलिए अभी हमने स्टार्ट किया होता है फिर हम लोग आगे ठीक है तो माय सजेशन विल बी कोई नेहरू स्ट्रीट करके एक स्टार्टअप है ऐसा बिहारी स्टार्टअप उन लोग भी कुछ कर रहे हैं इसी फील्ड में तो यू कैन लुक देम अप my suggestion will be alternative medicine medicine not just ayurveda there is a lot of clinical herbalism there is a lot of plant based medication that happens beyond ayurveda you can look at that ये homeopathy is one of the मैंने नहीं देखा homeopathy के digital yeah और बिहारी का big but does it actually work? yeah it works for many where everything fails वहाँ पे वो सब चीजें start होती है modern medicine में drug distribution is very controlled जो है डॉक्टर लिखेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है state that's a process तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है बट ऑल्टरनेटिव में जो है सो आप पर्सनलाइज कैसे कर सकते हैं नहीं पर्सनलाइज कैसे करते हैं पर्सनलाइज थोड़ी करते हैं पैरासीटामोल ले लेना anything else any other questions no thank you so much patients and this group activity was in particular very fantastic. I request maybe some other time, maybe virtually also, if you prefer somewhere else. So can we do it again? yeah sure I mean you know if you want you can get ask all the co-workers to actually create just a startup together. They can work on creating, submit the idea to the government, and they can create a startup together. It will just help break the ice. An expert virtually and then Yeah, I would love to guide them. Sure, there's no problems. That is if they have the bandwidth. अभी तो काफी उनके ऊपर pressure होगा to perform, so it's okay. I like to request for one very small conversation.
Thank you so much for having me. Thank you so much for patiently listening to me, for taking out 2 hours of your workday. And yeah, get back to work and let's put Bihar on the map. Let's do it. Okay.